So for newlywed couples, if you're looking for honeymoon options, we would really suggest this. Hi all! Welcome back to our channel. I'm Neha. I'm Tejas. And welcome back to Smiles and Love with Neha and Tejas. And today's video is extra special because We are celebrating our second year anniversary just the way we did our first mini honeymoon. मिनी हनीमून नहीं था, वो हनीमून ही था, गए नहीं कभी उसके बाद. हाँ बहुत बार गए हैं पर नाम अलग अलग है उसका. बर्थडे ट्रिप, वो ट्रिप, ये ट्रिप ऐसे है. अच्छा. So we are on our anniversary trip and बहुत सारे जन ने पूछा था हम Instagram पे कि what are you guys planning for your anniversary, कोई trip पे जा रहे हो कि नहीं, and this is the day we are going. And as Tejas said, we are doing it same as we did our honeymoon 2 years back. Almost same time. Exactly same time. हम December 1st week में ही गए थे and we are back in the same time. So where have we come? We have come on a cruise. It's a cruise vacation and we are going from Mumbai to Goa to Lakshadweep and back to Mumbai. But हम आपको सारा information देंगे ये video. So we are vlogging. बट आई एम ट्राइंग टू टॉक इन हिंदी बिकॉज बहुत सारे जन ने बोला कि नेहा हिंदी में बात करो, आप मराठी एंड इंग्लिश या कन्नड़ा में बात करो, तो हमें समझ में नहीं आता है. तो हम ट्राई करेंगे हिंदी में बात करने का, बट बीच बीच में इंग्लिश मराठी कन्नड़ा और हमारा खुद का लैंग्वेज सब आएगा. तो इस वीडियो में इफ वी विल ट्राई टू गिव एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल अबाउट द क्रूज, the costings, what all are included in the cruise, the room tour, the cruise tour. So if you're looking forward for a cruise vacation anytime soon, so you can watch this video till end. And it's definitely worth it, and you can kind of see it because we are repeating on the almost the same route. It's just we are adding Goa this time, but otherwise we are going Lakshadweep. Lakshadweep is pristine and we are so excited to see it. We loved the first time experience of the cruise and we just went after marriage. So for newlywed couples, if you're looking for honeymoon options, we would really suggest this. You can take cruise trip as your honeymoon because you need that network नहीं होता यहाँ पे. बिल्कुल, that's what I wanted to say. Yeah, you would have Wi-Fi option, but maybe you can skip it and you will be completely outside world से दूर रहोगे 5 days or 4 days. You will get all of the options there. We'll share all of the details with you guys. Yeah, stay tuned. Watch the video till full and don't forget to subscribe. And comment for more details if we have missed anything. ये लास्ट में बोलना होता है, अभी नहीं बोलना होता है. ये सीख रहा है अभी तक ब्लॉग करने को. कोई नहीं, मैं भी सीख रही हूँ बट ओके. Expert? The starting point of the cruise is from Mumbai, from the Bollard Estate. There is where we have an international cruise terminal. And the process is exactly same as like an airport check-in. You take all your luggage and check in into the big cruise. Here's the first look of the Cordilla cruise. How big it is now. The name of the cruise is the Empress and I'm sure it's as beautiful as its name. It also has 11 decks, 796 rooms and we cannot wait to explore the cruise. The onboarding on the cruise starts with some welcome drinks and some tikka. Gentlemen, this is Rohan. You can also step into our spa on deck 10 out and pamper yourself with massages and salon service. Chopsticks, our fine dining restaurant, or the exclusive chef's table by dialing 2222 from your cabin phone. Now we are checking in. Excited? Very excited. Luggage. Our room tour, guys, this is an Ocean Premier room and they have different types of rooms also, but this is on the deck 9 and it does cost a little more than the rooms on the lower decks like 4, 5. Wow, अभी तो ओशन नहीं दिख रहा है पर बाद में ओशन दिख रहा है. The package starts from 26,000 per person and for this room and everything included, it costed us nearly 2 lakhs for 2 people. Like both of us, 2 lakhs. Oh. Very cozy and all utility room.
Starlight is where is Starlight? Starlight dining room. SV5. 5 पे? Yeah. Somewhere else. Take a video right away. Okay. It's empty. This is pure veg. This is pure veg and Jain food. Downstairs you get both the options. Okay. So this is Starlight Restaurant. You have two restaurants. Starlight is also divided into two parts. This is only for veg and Jain food. And then you have down, which we'll see now, which is for non-veg as well. So here down, you have the non-veg one also. Where did my husband go? Oh, he's there. उसको ना नया कैमरा दिला है तो now he is trying to vlog on his new camera. लिया बस राइस और कुछ तो दाल. ये है तेजस का फुल, क्या बोलते हैं इसको? Cult meat, cult plate, कल्ट मीट बोला है cult इसने. meal. कल्ट मील, So करेक्ट. you have paneer, 2 portions of protein, and there is some dal as well. Again protein. Little protein, and rajma again protein. Fiber. Some fiber here with vegetable and little carbs. Very good. Let's start. We'll try to eat healthy even on the cruise when we are on vacation. है ना? We'll try to. Yeah. हाँ इधर प्लेट है ये. जो ये जो नमस्कार, मैं रोहन, आपका क्रूज डायरेक्टर. आप सभी के लिए एक सामान्य आपातकालीन ट्रेन बुक में एम्बार्क हुए हैं. यह डील आप सभी के लिए Now it is high tea time and you get a variety of things for high tea. हमने तो sandwich, ढोकला, सूकी भेल, some I don't know what this is. Masala Bombay sandwich. Masala Bombay sandwich and chaha. Bakarwadi. Bhakarwadi. खूप छान मसाला चाय. खूप छान. हे इधर लाइटिंग जरा बेटर है. Yeah. Now we are starting from Mumbai. है ना मंटू? Yes. देखो the skyscrapers. Sorry, skyscrapers. Sky what? Scrapers. Scapegoat है ना तो. Scapegoat में बलि का बकरा. बट अभी हम निकल चुके हैं फ्रॉम मुंबई टू क्रूज इन द ओशन एंड सनसेट हो रहा है. This will be our view on a day-to-day basis. Yes. The sunsets and the sunrises. So beautiful. First sunset on the cruise. हो खूप सुंदर आहे आणि मुंबई पूर्ण स्कायलाईन मुंबईची दिसते. किती सुंदर. स्वतःचा चष्मा आणला, माझा नाही आणला. नहीं चाहिए तो मैं नहीं मी खाया. बोललंच नाही, तू स्वतः ना.
Listening? Listening is very careful. Okay, so everyone will try this one more time. Raise your left hand, touch your head, touch your forehead, touch your nose. Hi Punu. Hi Risha. कोई रिक्शा नहीं है। अभी भूख लग रहा है आपको? 7:30 को डिनर स्टार्ट होगा एंड इतना मस्त डिनर मिलता है यहाँ पे। I'm waiting to go. आज मैंने नहीं बोलते बोलते एक डेजर्ट खा लिया। चीटिंग हो गया मुझसे, बट they have such a beautiful spread of so many items to eat, तो couldn't control। और बाकी का सब हेल्दी खाया है और अभी बहुत भूख लग रही है। Of Indian song and dance that is diverse, colorful and super entertaining. All you got to do is sit back, relax and give our performers a lot of love. The cruise has so many activities. Like right now we are at the Marquee Theatre for a musical show where they have their own crew who dances, does acting, and they have like movie time and everything. So the cruise starts at around 26,000 rupees per person, and it takes you to different locations like Kochi, Lakshadweep, Goa. It also has international, so you can check out on their website. And due to the songs being Bollywood songs, I'm not able to tell you the audio, otherwise copyright issues will come in. But just wanted to tell you the details of booking. You can directly book it from Cordelia Cruises itself on their website. Oh my god. बिल्कुल भी नहीं खाना। Hi Punu. Ready for the gym? Of course, yes. It's late, but still we are going to hit the gym first and then have breakfast. Yeah, let's go to the gym. Hi. We did a nice workout and then some breakfast. कल मैंने अनहेल्दी खा लिया था, तो आज मैं प्रॉपर डाइट करने वाली हूँ. So this is my plate: omelette, muesli and some fruits. They also have a spa here. Every day you get this Cordelia Today, where they tell you everything, highlights of the day, the itinerary, and time to time what is happening in the cruise. So it's a good handy navigation page. You can keep it with you with everything written, all timings written on this.
अभी 4 बज रहे एंड वी विल गो फॉर अ हाई टी एंड काफ़ी लीजर सा दिन है आज. हम हाई टी के लिए जाएंगे. विल हैव सम टी एंड सम स्नैक्स. उन लोग बहुत अच्छे स्नैक्स भी देते हैं. कल भेलपुरी, सेवपुरी, ढोकला, कचौरी, समोसा भी था, समोसा, which we did not try. हाँ, many things were there. एंड आज एकदम लीजर डे है, सो वी आर जस्ट इंजॉइंग. हमने स्ट्रेंजर थिंग्स के 2 एपिसोड देखे, वो आई वाज सेइंग. एंड बस अभी जाएंगे. एंड अभी इवनिंग को थोड़े यहाँ पे सनसेट्स आर सो ब्यूटीफुल, तो हम सनसेट देखेंगे. एंड सनसेट डांस भी करना है आपको? हाँ, कल भी डांस किया था, आज भी डांस करेंगे. कल सुबह 6 बजे, हाँ, कल सुबह 6 बजे हम गोवा के लिए निकलने वाले. सो द शिप विल लैंड, और not land, how the ship land, but the ship will dock at Goa. And हमें रिपोर्टिंग टाइम 6:45 AM दिया है. सो वहाँ से 1 hour लगता है टू disembark something these terminal. How will just get down on Goa, and then we have few hours on Goa. तो कल हम गोवा देखेंगे एंड परसों के दिन लक्षद्वीप देखेंगे. क्या परसों के दिन? हाँ, 2 दिन वापस आने के लिए. करेक्ट. एंड देन विल रिटर्न. तो लेट्स सी कल गोवा में क्या क्या होगा. ऑसम. बाय बाय. It's movie time now. और अगर किसी को कोई शक हो तो जाके अपनी पॉपुलेशन चेक कर लो. अब तो हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है. But jokes apart, what I was trying to get at was wedding. फिर चाहे arranged marriage हो या love marriage. Once we get there, what do we do, जी? वाओ, अच्छा डिनर है आज, है ना. फुल टाइम क्युरिओसिटी. काय आहे, काय नवीन आहे, काय वाचू शकतं. कुछ मिल रहा है इन्फॉर्मेशन आपको? तभी नहीं खड़ा हुआ था, होगा भी तो हमें पता नहीं चलेगा. हाय. अभी द क्रूज इज एक्चुअली स्टैंडिंग एट 1 point and it's not moving at all. हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही. वेलकम टू गोवा. गुड मॉर्निंग. इट इज day 3 and we have going for shore excursion in Goa. This is the cruise. बहुत बड़ा शिप. The Empress. That's the name of a cruise. Yeah. We are Abhi heading to the subah cruise and there is a bus waiting for us. We are late by half an hour. We are not late. अभी तक चल ही रहा है shore excursion. Excursion. कौन से बस में जाना है? सुबह 7 AM को हम गोवा में. I've never come this early to Goa, but there is a sunrise. I don't actually. It's nice. It's really good. And here are the buses that we are boarding. Hi, we have boarded the bus now, and we will go to the shore. Which beach are we going today? Polva Beach. Okay. Let's see what's in the store. Is it just a drop or do they have other things planned? I don't think there are much activities on this beach. There are many more activities on Lakshadweep when we go to Lakshadweep. So this is, I think, more about exploring. The British were not there. That would. अभी हम ब्रेकफास्ट को जा रहे हैं. ये लुकिंग सो नाइस. इधर बहुत मस्त लग रहा है. हैंडसम कुंटू. क्या हुआ? This is the 4th time we are coming to Goa. मुझसे बात करना. हाँ? मुझसे बात करना.
क्या हुआ 25 साल में? हाँ, so 25th on his 25th birthday I met him. Universe gave him gift which is me. फिर 26th birthday पे तो कोविड था. 27th birthday को I think we went some dinner, poolside dinner. 28th birthday को I got him for a road trip to Goa. And then 29th birthday ko we were in Singapore. 29th birthday we were in Singapore. नहीं. 29th birthday we were in Rajasthan. उदयपुर लेके गई थी मैं. 30th birthday we were in Singapore. 31st birthday we were in Taj. Yay. फलकनामा हैदराबाद. Yes. देखो यूनिवर्स का गिफ्ट है तुम्हें कैसा भी. इंटरनेशनल है 32nd. वो सरप्राइज होता है, पहले से सब नहीं बता सकती मैं. कुछ तो सर्च करना, मुझे पता चल जाएगा. नो. गोवाला येऊन पण इडली वडा खाणारे कोण आहे? पिंटू आहे. These are Desai cashews. So the person told us that there are 3 brands here. Drum roasted. There are 3 brands which are famous and are the most authentic ones. So you can try to take those. Desai, Kamat, and there is one more which हाँ. Zetang or something. Hi. ये तो beautiful दिख रहा है. This is the beach we have come to. कौन सा beach है बाबू? Kolava. Hi. It's very sunny, although the time is just 9:30. It's sunny, but it's still breezy and Nice, let's have it's fun. nice. Me hi Kori. और को हाय बोलो. Hi. हाँ आ जाओ. ब्लाइंड डेट पे आइए, ऐसा लग रहा है. इधर नहीं करते. Bum bum chick bum chick. Puntu. So now we have met 2 people and they told us how much they like our page and that made us very 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 happy. They are from Hyderabad. Yeah. So this smile credit goes to them if you are watching. Thank you so much for making our day. ये सिनेमैटिक है क्या? तुम ब्लर हो रहे हो. नाम याद है? उनका नाम यामिनी. Yamini, correct. Her name was Yamini and she's also from Hyderabad. So thank you so much for coming up to us and telling us how much you like our page. I think this small appreciations, you know, they make a lot of difference. Thank you again. खूप ऊन आहे इथे पण तरी पण come to a cafe to while away some time. It's a beautiful cafe. इसका नाम क्या था? Soul Vacation. You guys can check this out too. Yes. Hi. There is a spa here I'm checking out. It's just next to the beach. So if you're here, you can definitely check this out. आता मी मस्त एक मसाज करून येते. गोवा and massage is like best. Taking an Ayurvedic spa now. एक मस्त मसाज लिया मैंने and steam also. ना मस्त लग रहा है. Thank you. Glowing face. Yes. चल आपका बैग ले लो. Now we have come back on the cruise. Goa is done. मजा आएगा आपको गोवा में? थोड़ा लीजर सा था. एक बीच मैंने एक स्पा कर लिया, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया. It was nice. 3 to 4 hours था गोवा पे, है ना? धूप बहुत ज़्यादा है. But still it's fun. Beach is never disappointing. Yeah. She loves beach coming from Mumbai. It's always good.
and spice cherry on top. Yes. It's evening and the sunset is so beautiful. अभी तक sunset नहीं हुआ है, but the view is. दिखाती हूँ एक second. Look at that. So beautiful. पूरा golden light आता है. अभी हम चाय ब्रेक के लिए जा रहे हैं. चाय ब्रेक के लिए. चाय ब्रेक. अभी तक हम बिजी थे, अभी ब्रेक. अभी हम स्ट्रेंजर थिंग्स के एपिसोड 4 पे हैं. अभी कुछ नहीं, पूरा डार्क है. ठीक है. Let's go. Hi. हेलो. Hey, beautiful. Hi, beautiful. Snacks with a view. Guys, यहाँ क्रूज वर रॉक क्लाइंबिंग सुद्धा आहे. यू कैन सी देयर. यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग भी है. इट्स अ चार्जेबल एक्टिविटी एंड नॉट मच ऑफ चार्ज. कितना है बाबू चार्ज, याद है आपको? बट दिस इज रॉक क्लाइंबिंग एंड लुक एट दिस व्यू. सो ब्यूटिफुल. वहाँ पे मून भी आया है. कितना है? Nearly 230 to 50 rupees. 250 rupees से कम है. 200 to 250. ओके. Depending on the exchange rates and taxes. हाँ, सस्ता है, कर सकते हैं. Just standing here by the cruise. This is the end of the cruise, ना? Yes. बहुत मजा आ रहा ये है. ब्लू लाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन देखने में क्या मजा आता है. काफी मजा आता है. दिखाया मैंने. Spending the time with this light blue and blue waves. मुझे क्यों दिखा रहे हो? वाओ. इवनिंग्स हो तो ऐसे है ना. वेरी सूदिंग, वेरी पीसफुल, परफेक्ट फॉर अ ब्रेक. आई गेस क्रूज वेकेशन का वही मजा है. यू कैन यू नो Not about the destination, right? It's just, एंजॉय द जर्नी. एकदम आराम कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, है ना. एंड देयर इज नो नेटवर्क, सो यू आर कंप्लीटली कट आउट फ्रॉम योर डेली वर्ल्ड. yeah. So एकदम good trip to rejuvenate yourself. Definitely, and it's like not necessary that you do the 5-day or 6-day. You can come for 2 days. There are different Yeah. options. You have seen Mumbai. You can start from Goa. You can start from Kochi as well, I guess. And you just So go they to have 2 days का trips also and different ports. जितने में ports है वहाँ पे start होंगे. So like this one we are doing is Mumbai, Goa, Lakshadweep, back to Mumbai. But there were people who just came from Mumbai to Goa. तो वो 2.5 days में खत्म हो गया. But good experience. Yeah. है ना? Completely worth it. बस मैं walking कर. एकदम दिल धड़कने दो vibes. हमेशा मेरे फ्रेम के बीच में आता रहता है ये इंसान. काय ब्युटिफुल सनसेट आहे गाईस. दुसऱ्या पार्ट ऑफ डेक वरून दुसरे सनसेट्स दिसतात आहे. तेज को ज़बरदस्ती जिम लेके आई हो. ही इज़ माई ट्रेनर, माई हॉट ट्रेनर. अब मुझे ट्रेन करो वेट्स के लिए. उसको मन नहीं है बिल्कुल भी एक्सरसाइज का, बट आई वॉन्ट टू एक्सरसाइज. सर जी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं. नहीं बोलते बोलते हु इज द वन एक्सरसाइजिंग. Then we ended the night by playing some games. In the next part of the vlog, you will see everything about Lakshadweep, so come back for part 2. Let us know in comments for any questions and thank you for watching.